Devesh Bhardwaj, Assistant Professor SDCMS, Muzaffarnagar in BCA department. Today we are discussing over the topic of DBMS, Database Management System, and the topic what I have selected is data normalization. So this is all about what? Data, and another word is normalization. So that means we have complicated data, and out of that complicated data we are trying to normalize that data. How? We have gone through two more topics in DBMS, that is generalization and specialization. So if I say specialization, what is specialization? Specialization means, let's say for an example, we have a category called vehicles. So if I want to specialize that data, so in vehicles we have n number of vehicles, like n types of vehicles, like buses, trucks, cars, bikes, scooters, gearless scooters. So we have n number of different types of vehicles. So when we use this particular term, specialization of vehicles, that means we are getting in each category. What? Vehicles have cars, vehicles have trains, vehicles have planes, vehicles have bikes, electronic vehicles. So this is specializing in each category. And when we come to generalization, generalization means what? We are generalizing and we are cancelling all other categories and just considering only one vehicle. That means it is generalizing. Again, the same thing, normalization. Here we are categorizing our data into different other segments on the base of entities, attributes. Entities, we have different entities, and how we will select those entities according to the attributes of them. So let's move forward with the further slides. So, introduction to normalization. So if I will go through the definition of normalization, normalization is the process of organizing data in a database to reduce redundancy, means repetition, and improve data integrity. यानी हमारे पास ऐसा जब ह्यूज डेटाबेस है, कॉम्प्लिकेटेड डेटाबेस है, तो उसमें काफी हद तक चांसेस है कि हमारे पास रिपीटेड डेटा भी होगा. तो नॉर्मलाइजेशन बेसिकली क्या करता है, उसी रिपीटेड डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए उसको बाहर करता है, रेड्यूंडेंट करता है, देन सो दैट हमारे डेटा की इंटीग्रिटी एज इट इज बनी रहे. अब इसको अगर मैं वन लाइनर में समझाना चाहूँ, वन लाइनर में होता क्या है. सो what we exactly do in this, we break large tables into smaller ones and save space and avoid errors. यानी कि हम बड़ी बड़ी टेबल्स को स्मॉलर में तोड़ते हैं ताकि हम स्पेस को सेव कर सकें और अपनी एरर्स को अवॉइड कर सकें. फॉर एन एग्जांपल, इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग अ प्रोफेसर्स एड्रेस इन एवरी स्टूडेंट्स रिकॉर्ड, यानी कि हर स्टूडेंट के रिकॉर्ड में, suppose karo I am a professor of DBMS and I have a class of 245 students to teach this subject. So in the college database, if every student have my name along with him in each and every database, so it will be complicated. So here is a different way to present it. We store it once in a separate professor table. हम इसको एक separate professor table में सेव करेंगे, जहां उस प्रोफेसर का एम्प्लॉय आईडी होगा. वो एम्प्लॉय आईडी विल वर्क एज अ प्राइमरी की इन दैट पर्टिकुलर प्रोफेसर टेबल. बट वंस वी कॉल दैट प्रोफेसर डेटा हियर along with that student, we will use that employee ID as a foreign key and we will access the data, right? So let's move further. Now come to database anomalies, यानी प्रॉब्लम्स क्या आती हैं इसमें हमें. सो सबसे पहली है अपडेट. जब हम डेटा को अपडेट करते हैं उस समय की प्रॉब्लम, चेंजिंग डेटा इन वन प्लेस बट फॉरगेटिंग टू अपडेट इन अदर्स. हमने डेटा को एक जगह से चेंज किया लेकिन हम उसको भूल गए दूसरी जगह पे चेंज करना, which leading to inconsistent data, जो हमारे डेटा को inconsistent बना देता है. So now next is insertion anomaly. इंसर्शन यानी जब हम डेटा को
इंसर्ट कराते हैं उस समय क्या प्रॉब्लम फेस होती है। तो नंबर 1 इसमें है बीइंग अनेबल टू ऐड न्यू डेटा बिकॉज सम अदर डेटा इज मिसिंग, यानी कि हम किसी एक डेटा को ऐड करना चाह रहे हैं, उसको हम ऐड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उससे जुड़ा हुआ कुछ और डेटा मिसिंग है। इसका एग्जांपल अगर मैं दूं कि हमारे पास बीसीए कोर्स है, हमें बीसीए कोर्स में एक लिस्ट बनानी है जितने हमारे पास स्टूडेंट्स हैं उनकी। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास बीसीए है एज अ कोर्स हमने ले लिया है, बट हमारे पास एडमिशन एक भी नहीं है। सो दैट मीन्स कि रिलेटेड